بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ۔ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے۔ آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان کے ہاتھوں نشریات کا باقاعدہ افتتاح ہوا۔ اس وقت شام کے 6:30 بجے ہیں، ایک نگاہ گھڑیوں پہ ڈال لیجئے تو ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اور تفصیل بتا رہا ہوں۔ ابھی کچھ دیر کے بعد موسم کا حال بتایا جائے گا۔ بچے اپنا پروگرام دیکھیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ بچوں کو کھیل ہی کھیل میں بہت سی کام کی باتیں بتائی جائیں۔ تو بچوں، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہوائی جہاز کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اس پروگرام کا عنوان ہے ہوائی جہاز خود بناؤ۔ اس کے بعد ہیلو، السلام علیکم، گڈ مارننگ، خوش آمدید، جی آیانو، goedemorgen. Bukhair agale, ni hao, jurushumme, washmale, ohai, gonzaimes, guten morgen, hola, bonjour, privyet, kaifa hal, hale shuma chatore, ahlan wa sahlan, marhaba, buna, mucho, gracias, swabiab, and a very happy Hajj Day to Pakistan Television Corporation. Ladies and gentlemen, exactly 56 years ago, this was the clip which was for the very first time aired. In fact, it was a live transmission back then. Tariq Aziz Saab, ladies and gentlemen, what a legendary personality, took on and he made sure that, he's actually going to create history as well, and it was created. But the best part today was that 56 years ago, ladies and gentlemen, on the 26th of November 1964, it was a Thursday, and today it happens to be a Thursday as well. Definitely, and we're so nostalgic, absolutely, just watching this clip earlier in the show as well. We have goosebumps, and I'll tell you why, because this is sort of a transition you're watching within a few seconds, right? How we started from black and white Shahzad on small TVs to now, of course, having a colored television. And of course, now we have private channels as well, but till date, after 56 years of all this, PTV maintains its legacy. Everyone knows it's by its integrity and the type of work that it does, the quality it has upheld. I think it's amazing for us to be working here, and really happy to actually be talking about the 56th year of this very running channel. Exactly, and ladies and gentlemen, not just that, wherever you're actually, whatever channel you're going to tune into, you will actually find people which were actually, the talent was produced by Pakistan Television back then as well. Oh yes, and even as of now, because people do label us as stars, so we're very thankful for PTV for giving us this kind of reach and for giving us this kind of recognition as well. But I have a question, sorry, before you do move on. Go ahead, I'm excited. Can you name like some of the actors or actresses that were your favorite from PTV? Exactly, why not? Because they produced some brilliant dramas, I can't even like put Why to not? words Because how there was a time, and I've lived through that time as well, where it was just PTV as well, but we are glad, alhamdulillah, that PTV, ladies and gentlemen, has got 10 channels now. Oh yes. Namely, I think I would love to name that, Can you do that? First, and then I'm going to come down to the artist as Do well. it. So, okay, I hope I'm going to do justice. So, for all of the channels I have worked for in the first place, so that is PTV Home, PTV Sports, and PTV World. And then moving on, we have Bolan, we have AJK TV, we have Parliament TV, Yes. we have Teleschool TV as well. And then we have PTV News. So I think I've covered 8 or 9 Global as well. and whatnot. Yes, and we have got PTV Global, so that's 10. Now coming down to the artists, ladies and gentlemen, the most famous ones which I can remember as of now, Madam Noor Jahan. Oh, of course. Fazila Qazi, Sabri Brothers, Nusrat Fateh Ali Khan Saab,
Kavi Khan Saab as well, ladies. For all of those legendary actors who are out there, ladies and gentlemen, were actually produced by PTV, because PTV was the first ones to actually come up with their own production teams as well and used to produce dramas. For that matter, I think we need to talk about Shoaib Mansoor Saab and other veteran directors and producer, Agha Nasir Saab. You know, there is a long list, ladies and gentlemen. Absolutely. Like you said, it's a long list, and there are some names of the legendary actors and directors that we're not going to take right now because we have them in the studios. We'll get to that later. But just right now, Shahzad, do you know that the first ever studio to be opened for PTV, well, it was decided that two are going to be opened simultaneously in Dhaka, then Dhaka, and in Lahore, being the capitals of East and West Pakistan. Yeah. So the first one opened in Lahore, and then, well, the third one did in Islamabad / Rawalpindi because it was the then federal capital. And, well, it then came to Multan and Quetta, and like you mentioned, Peshawar, so many other cities as well. So this one actually happens to be, well, quite some years old, and still, because you know the legends that we're talking about when they did enter the office, they were actually telling us stories of this very studio that we are doing the show in. And I mean, it's really inspiring for us to be actually having them here, right? Exactly. And I think, ladies and gentlemen, it was today that, you know, I kind of realized that, you know, that we're actually, we have been doing this show for more than 7 years now, alhamdulillah. And today was the day when I realized that, you know, that legends were actually, you know, over here in the studios amongst us as well. And we hope that, you know, that we are even on the same path as well, where, you know, after probably 2 decades or 3 decades or 4 decades, people would be like, you know, we grew up watching your show. And that's the legacy of Pakistan television as well, ladies and gentlemen. Talking about Pakistan television, Pakistan television has always upheld the morals of the society as well. And not just that, they've always made sure to produce content which is going to educate. Imagine that we have actually shared a clip with you from 56 years old, where the very first program for kids, which was going to go on air, the title was How to Make an Aeroplane, ladies and gentlemen. And I think that this is something which is very important for people to understand as well. Right, and Shahzad, don't you think that even today we, at least on our part, try to incorporate such informative things for people of all age groups, right? So that at least they can take away something from PTV. We always want to be that institute that imparts knowledge and information, and the right kind of knowledge and information. Exactly. Now, I do remember one thing. Before going to school, it was probably around 7ish in the morning. Yes. You used so to watch Tarar Saab's morning show? Yes, and then there were Meena, the cartoon, used to play as well for some time. There were some cartoons, and then people used to sending letters and paintings, and well, twice or thrice I did send in a letter as well. Wow. But they never read it. It's all right, because it was entire Pakistan sending them letters as well, so they might not have gotten that chance as well. But one last thing before we, ladies and gentlemen, move on to our legendary guests who are over here in the studios with us, who are ready to share their stories of how it was when they used to come to the studios probably back in 1990s. Imagine that, you know, listening to stories of that sort will be fun. But just one last thing, and that is that, you know, when Pakistan television came into being, there were not a lot of people who actually had television sets at their homes as well. Right. So my mother used to tell me that her father was one of the lucky ones who actually had a television. And there was a certain timing for the programs. You know, for example, just like Tariq Aziz Saab mentioned, that it was from 6:30 p.m. onwards as well. So that's the time when the television used to operate as well. So people would come, you know, all the entire neighborhood would come and ask them that, you know, what time the program is going to be on. And for example, if it's going to be at 7 or 8:30 or 6:30, they would tell the entire neighborhood, and the entire neighborhood would gather at their place just to watch a show. Like an open But ladies and gentlemen, very quickly, I think it's about time that we introduce our amazing guests who are over here with us as well. You know, they've been great actors so far. They've entertained us all our lives as well, and I think that they deserve this respect, that, you know, we have actually invited them over here today so that we can celebrate with them, we can cherish those memories as well. So first, I think what we're going to do is that we're actually going to play a clip of his, and then when you guys will come back, we're actually going to introduce our guests as well. So let's go. Let's take a look at this wonderful clip of this wonderful actor. Suggest kar yaar, mera dimag bilkul kaam nahi kar raha. देख मामू, तुझे अपनी सीनियरिटी का वास्ता, तो हम सबका बुजुर्ग है यार। वही जो जापान ने एटम बम खाने के बाद किया था। Oh God, what is happening? यार बात बड़ी वाज़ेह है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तू खामखा बीच में टांग अड़ा रहा है यार। टांग अड़ा? मैं कॉलिन में इन्वॉल्व हो चुका हूँ। वो मेरे दिमाग से उतरती ही नहीं। तो कह रहे मैं टांग अड़ा रहा हूँ। इसमें किसी का क्या कसूर? Shut up. Okay. सैलाब,
ये सैलाब बीच में कहाँ से आ गया? हमारे स्कूल में आप एक नहीं, अक्लमंद सर। हाल ही में मेरा उसने कहने का हमले मतलब है किया। उसी कि गांव तुम में एक उस्ताद ऐसी भर्ती चीज हो के गया, पीछे खामखा भाग उससे रहे हो कोई कर्ज जो सूद हकीकत भी में नहीं अपना देता, वजूद ही नहीं तो रखती। अकल खरीद तुम क्या समझ करता रहे हो है? मेरी बात? है? मैं उनके सर साथ आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर, बिल्कुल सही। मैं हीर के सर साथ वो प्लाजा वाला मैं किस्सा क्या रांझा का हुआ? सपोर्टर हूँ। अरे प्लाजा मिर्जा का प्लाजा के फॉलोअर लिए हूँ कोई यार। जगह ही पसंद नहीं आ रही कह दो फिलहाल। दोस्त होने का इल्जाम अपने सर नहीं ले सकता। तू मुझे कह दो कह रहे? तूने मुझे मजबूर किया कि ये तस्वीर दी। शराब श्री उल्लू कहेंगे वो अच्छा नहीं तो कम से लोग सही कम बात कहते तो अच्छी कर दो। शायद किसी का साहब वो मैंने एक जगह देखी है बड़ी जबरदस्त जगह कोई बात नहीं, जगह तुझ पे भी ये वक्त आएगा। तो ठीक है किसी वक्त चलकर देख लेंगे जगह। पता नहीं मैं सेठ तेरे साहब साथ वो उसका अशर मालिक करूंगा बेचता जो भी अमेरिका है अपने कि दुश्मनों नहीं के साथ बेचता? करता है। कैसे नहीं बेचेगा मैं मालिक को भी साथ ही मालिक को भी आपके मुंह से तो फूल झड़ते हैं। क्या झड़ते हैं? Ladies and gentlemen, the legendary actor, the legendary comedian who was actually a part of the star cast for Guest House, for Kaliyan, for Yes. Sargam Back Home, ladies and Chappar gentlemen, Hotel for Chappar that Hotel as well, matter. ladies and gentlemen, he's amongst us as well. He's one of those people who's made sure that he's going to spread smiles just like they are contagious as well. He is the one and only Mr. Raheel Mustafa. Hello, Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक। आपका अपना घर समझे। बिल्कुल ऐसे ही है सर सर। बहुत अच्छा लगा कि आज आप इस पुरमसरत मौके पे हमारे साथ हैं और इस सफ़र में भी हमारे साथ हैं और आपने इस सफ़र के आगाज़ में जो काम किए आज तक वो भी हमारे साथ हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जी इस मौके पे 56 एनिवर्सरी पे आप लोगों ने हमें याद किया और बहुत सारी यादें जो हमारे साथ जो पहले हमने काम किया उस हवाले से आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है कि कम से कम आपने उन लोगों को याद किया जो पिछले काफ़ी अरसे से काम करते हुए यहाँ तक पहुँचे। Of course, and why not? So, ladies and gentlemen, we're basically, of course, like we already mentioned, celebrating these legends by calling them back over here in the studios. Sir, when was the last time you came to PTV? इससे पहले? उससे पहले कोई शायद था कि 1994 Oh, I was 1994 born in में 94. हाँ जी पहले हमने एक कहानी बड़ी पुरानी हमारा प्रोग्राम हुआ करता था बच्चों का जिससे हमने स्टार्ट लिया सैयद शाकिर ज़ैद साहब प्रोड्यूसर होते थे वहाँ तो वहाँ से सफ़र चलता रहा फिर बच्चों के प्रोग्राम्स करते करते ड्रामा की तरफ आए तो ड्रामा के सामने आपको क्या बात है सर बहुत मुझे ladies and gentlemen I cannot actually express the way I'm feeling right now because to be very honest I think for all of those people who respect and take inspiration from these legends are the ones who's Yes. actually going to make it big on screen as well. But moving on, ladies and gentlemen, we have another special guest as well, who was once again was the one of my favorites as well amongst these dramas and the cast within these dramas as well. Speaking for that matter, I think it was Guest House, it was Chappar Hotel, it was Kaliyan, Goody Goody. You know, there were so many dramas which we used to watch on PTV as well. Ladies and gentlemen, he's the one and only, the very legendary Mr. Saeed Anwar Saab. Hello sir, Assalamu alaikum, how are you? वालेकुम सलाम सर मैं बेहतरीन हूँ आप कैसे हैं सर बहुत शुक्रिया सर आने के लिए आपने वक्त निकाला आप आए आज आप हमारे साथ इस सालगिरह में शामिल हुए हमारी खुशियों में शामिल हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है सर आप यकीन करें मुझे इसलिए बहुत खुशी हो रही है कि जब से काफ़ी अर्सा हो गया हमारे पास टाइम के अलावा कुछ है ही नहीं है हमारे पास टाइम ही टाइम है और बहुत टाइम है इस्लामाबाद के एक्टर के पास बहुत टाइम है क्योंकि इस्लामाबाद से काम बहुत कम होता है ऐसा ही है सर लेकिन माशाल्लाह हम इस्लामाबाद सेंटर से हमने बहुत काम किया हमारा जो फेस जो रिकग्नाइज हुए हैं हमें लोग जानते हैं वो इस इस्लामाबाद सेंटर की वजह से तो जो सॉरी शहजाद आई एम कटिंग यू बट अभी हमने एक ड्रामा का क्लिप देखा और बहुत सारे और ड्रामास हैं इस्लामाबाद में आपने कोई शूट किया था जाहिर है सारे इस्लामाबाद में शूट हुए उस वक्त के स्टूडियोज ठीक है डेफिनेटली हाँ तो अभी हम एक्चुअली जब हम ब्रेक पे भी गए थे तो मैं आप लोगों से पूछ रही थी कि रीटेक्स का क्या सीन होता था बिकॉज मैं आप लोगों की क्लिप्स देख रही थी तो लेडीज एंड जेंटलमैन परफेक्ट परफॉर्मेंसेज फ्लॉलेस आई मीन रीटेक्स होती होंगी या तो आप लोग थे ही परफेक्ट नहीं परफेक्ट कोई नहीं होता वो होना पड़ता है ये असल में हमारी चूँकि अकेडमी कोई नहीं है हमें यहीं से सीखना था यहीं पे हम आए हैं यहीं से सीखा है क्योंकि मैं तो थिएटर भी करता था थिएटर के एक्टर ये होता है कि थोड़ा सा उसको ज़रा आसानी होती है आगे काम करने में क्योंकि उसने लाइव परफॉर्म किया होता है तो हमने डांटें भी खाई हैं झाड़ें भी सुनी हैं यहाँ तक कि तारिक मिराज साहब का एक ड्रामा था उसमें ये हुआ कि ना मैं तीन दफ़ा मैंने रीटेक करवाई ना तो उन्होंने बाकायदा मुझे बुरे तरीके से डांटा और कहा कॉरिडोर के चक्कर लगाते हैं जब काम मिलता है काम नहीं होता मैंने कहा सर
अभी मैं करूँगा, अगर मैं सही ना करूँ, मैं अगर रीटेक करवाऊँ, ना मैं आइंदा काम के लिए आपके पास आऊँगा, ना मैं आइंदा ये काम करूँगा, छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है उसके बाद मैंने कर लिया और तारिक साहब ने भी थपकी दी। उस जमाने में डायरेक्टर्स जो है ना वो आर्टिस्ट पे मेहनत किया करते थे, सही, ठीक है ना। तो आपको रीटेक्स के वाले साहब बात करें कि रीटेक्स बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन आपको हर दफ़ा बताया जाता था एक एक लाइन पे मेहनत की जाए, ऐसे बोले, ये बिहेवियर है, ये बिहेवियर, ये बताया, इसकी वजह से आप जो है ना वो एक्टर बन पाता था। बिल्कुल। आजकल के ज़माने में जो है ना वो बताते नहीं है, सिर्फ ये बताते हैं आपकी रिकॉर्डिंग कब है, आइए परफॉर्म करें जैसा भी और आप जाए। सर वो थोड़ी सी रेवोल्यूशनाइज हो गई इंडस्ट्री, लेकिन मैं इसी मौके पे ख़वातीन हज़रात एक बात ज़रूर कहूँगा कि जहाँ पे हमने प्रोग्राम के आगाज़ में इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान टेलीविज़न आज तक अपनी उन वैल्यूज़ को साथ लेके चल रहा है, उन नॉर्म्स को साथ लेके चल रहा है, वहीं पे मैं अपने प्रोड्यूसर का भी आज जिक्र करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी हमें बड़ा सपोर्ट किया। हमारे जमशेद सुल्तान साहब को पूरा क्रेडिट जाता है आज के इस पूरे प्रोग्राम की, बल्कि सारे प्रोग्रामों की, जितनी भी अरेंजमेंट्स होती हैं, जितने भी गेस्ट के साथ इंटरेक्शन होती है, वो करते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि फिर हमें भी समझाते हैं कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। और ऑब्वियसली मसूद बेग साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं पीटीवी वर्ल्ड के, वो भी हमारे ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, हमें बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, समझाते हैं चीज़ें, जिसका मुझे लगता है कि हमें बहुत फायदा होता है, सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। Team work, basically this is a team work, right? And this particular institution, I think what we mean to say is that this is not only this year, ever since its inception, right? People have been working together to bring out the best content for the audiences. और मुझे आज एक और चीज़ भी लग रही है कि शायद और बहुत सारे लोग जो इतने अरसे से मुझे अंग्रेजी में सुन रहे हैं, शायद उनको ये लगेगा कि ये तो उर्दू भी ठीक बोल लेता है। हमें आती है of course, लेकिन ये requirement है channel की, because of course the channel. Exactly. So ladies and gentlemen, at this point of time, what we're going to do is that we actually have a clip of Saeed Anwar Saab as well. He's not just an actor, ladies and gentlemen, he's an award-winning actor as well. So we want to share those clips with you for all of those people so that you get a little bit nostalgic as well. Let's go, let's take a look. मलक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने वैसे उसे देखा है? नहीं, मैं तो बहुत मसरूफ रहता हूँ जी, मेरा तो कभी उधर ध्यान ही नहीं गया। और आपने? कहाँ जी? मैं आप लोगों को ज़हमत दूंगा, लेकिन फिलहाल पहले मैं खुद होके आ जाऊं। मन्नी, और कोई ठंडे का चक्कर चला है? अभी ले जी। यार ना कहीं। Well, the clips are really long actually, but I'm glad we cut it short because I have so many questions that I need to ask these legends over here. So, Saeed Anwar Saab, in fact, आपसे ही मैं फिर से शुरू करती हूँ। अभी के अदर देन द फैक्ट कि आपको लगता है कि पहले प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ऑफ कोर्स बहुत मेहनत करते थे, लेकिन अभी के पीटीवी में और जब आप काम करते थे तब के पीटीवी में क्या मेजर फ़र्क आया है? मेजर फ़र्क यही है कि उस वक्त हमारा एक जो खेल था, कोई भी हम ड्रामा करते थे जी, तो वीकली चलता था वो। अच्छा। एक हफ्ते में रिकॉर्ड होता था, फिर नेक्स्ट वीक वो चलता था और पूरा हफ्ता हम उसकी रिहर्सल करते थे। अच्छा। रिहर्सल करके फिर हमारे जुमले भी ठीक होते, हमारी मूव ठीक होती थी, हर चीज़। और फिर 3 कैमरे होते थे और हमें अपना ये होता था कि तीनों कैमरे एक वक्त हमें रिकॉर्ड कर रहे होते थे। ये नहीं कि अपने भाजी सिंगल पे ले लें या आप 2 शॉट ले लें। हाँ, वो तीनों कैमरे मतलब एक सेकंड भी रिलैक्स नहीं आप हो सकते। हाँ, नहीं। तो इस वो फ़र्क अब ये आया कि अब ये है कि आप सेट पे आके स्क्रिप्ट मिलता है कि यार ये भी 2 लेने, यार ये भी कर लो, अच्छा ठीक है, वहाँ पे सिंगल में ले लेते हैं, कुछ अपना फिर 2 में ले लेंगे, फिर लॉन्ग में ले लेंगे। अब तो काम आसान हो गया बस। नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको डिफरेंस लगता है? नहीं, डेफिनेटली 3 कैमरों पे जब काम होता है तो आपको एक सीन पूरा प्रिपेयर करके बता दिया जाता था कि ये है। अच्छा। तो वो पूरा बजाय इसके आप एक कैमरे पे जब काम होता है तो आपको लाइनें याद करने का वो होता ही नहीं कि आप लाइनें ना भी याद करता, उस चक्कर में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं रहती है। Exactly. तो आपको पूरा सीन याद होता था, आपको पता है यहाँ से लेके आपको ये करना है, यहाँ से चल के इधर आना है, इधर आना है, तो आपको पूरा सीन रिकॉर्ड हो जाना है। So, okay, Shahzad, I know you have a question as well, but I've been actually wanting to hear the answer to this one for so long. जब आप लोग एक्टर्स, of course अभी भी माशाल्लाह से आप लोग एक्टर्स हैं, but back then जब आप लोगों ने शुरू किया था तब सिर्फ पीटीवी था, तो मतलब कि पूरा पाकिस्तान आपको ही देख रहा है, एक ही चैनल है, तो वो जो स्टारडम था वो बहुत डिफरेंट था आज के स्टारडम से। आप पूरे पाकिस्तान के स्टार्स थे, तो अटेंशन कैसी लगती थी? बहुत अच्छी जी, बड़ा अच्छा फील होता है। डेफिनेटली आप एक पूरे देखिए ना, एक ही चैनल आपको पीटीवी पे देखा जा रहा है। आप कोई भी छोटे से छोटा कैरेक्टर भी प्ले करते हो तो आप जो है वो पहचाने जाते हो। आपके तो लोग आगे पीछे इकट्ठे होते होंगे तो सांस की जगह भी नहीं बचती होगी, जिस तरह से लोग प्यार करते हैं पाकिस्तान में। इनके आगे पीछे 3 बंदे इकट्ठे हो जाए चुप जाते हैं। अच्छा लगता है डेफिनेटली आपको जो है वो एक आपके प्ले के बाद आपको एक नहीं, एक्चुअली उस वक्त और ये भी था ना कि एक चैनल था
اور ایکٹر تو اتنے ہی تھے جتنے اب ہیں. اچھا. تو یہ تھا کہ فرق یہ تھا کہ اس وقت ایک چینل میں انٹر ہونا اتنا ہی مشکل تھا, بہت مشکل تھا. جو ان ہو گیا اس کا مطلب وہ ایکٹر تھا. اب جو اتنا آسان ہو گیا ہے, ہر چیز, جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس اپنا کیمرہ ہے, جس کے پاس اپنا پروڈیوسر ہے, جس کے پاس اپنا فائنانسر ہے, وہ ایکٹر بھی ہے, ڈائریکٹر بھی ہے, رائٹر بھی ہے, ویور بھی ہے. ایسے ہی آپ نے کبھی آڈیشن کیا تھا؟ سوری, I think Shiza is very excited today. سوری شہزاد, آپ پوچھیں. تھینک یو. میں صرف ایک چیز سر ایک اور پوچھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہمیں آپ کو ایک اور کلپ دکھائیں, ایک گانا سنائیں اور پھر اس فیمس سنگر سے ملوائیں. ایک چھوٹا سا سوال وہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن میں آپ سے بھی سر اور آپ سے بھی, کیونکہ آپ تو ایکٹر بھی تھے لیکن ساتھ کمیڈین بھی تھے, اور اس ٹائم پہ کامیڈی زیادہ مشکل تھی, لوگوں کو ہنسانا جو ہے زیادہ مشکل تھا. ابھی آج کل تو بہت زیادہ عام ہو گیا. تو جیسے ہم بات کرتے ہیں معین اختر صاحب کی, انور مقصود صاحب کی, عمر شریف صاحب کی, جتنے بھی لیجنڈری لوگوں کی جنہوں نے لوگوں کو ہنسایا ہے, تو ایک تو سب سے پہلے ان کے ساتھ کمپٹیشن کیسا تھا. دوسری بات یہ کہ صرف پاکستان کے جتنے بھی ڈرامے بنتے تھے وہ اکراس دا بارڈر اور پوری دنیا میں بھی دیکھے جاتے تھے. تو آپ صرف پاکستان کے اسٹار نہیں ہیں, آپ پوری دنیا کے اسٹار ہیں, جتنے لوگوں نے جہاں جہاں زبانوں میں دیکھا ہے. اور اس ٹائم جو رابطہ ہوتا تھا وہ خط و کتابت سے ہوتا تھا. ایسے ہی ہے کہ خط لکھا کسی نے, کوئی خون کے ساتھ کبھی لکھ دیا, کس طرح لکھ دیا. تو پہلے ایک سوال یہ ہے کہ کامیڈی کے کمپٹیشن کیسا تھا, پھر وہ کامیڈی کیسی تھی, کیونکہ کامیڈی میں آج کل لوگ بہت بلو دا بیلٹ بھی چلے جاتے ہیں, لیکن پی ٹی وی نے ہمیشہ ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کیا. ایک چیز وہ, اور پھر جب آپ ایک گلوبل اسٹار بنتے ہیں, پوری دنیا آپ کو دیکھتی ہے, تو کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ فیلنگس تو بہت اچھی ہوتی ہے آپ جب پہچانا جاتے ہیں. دوسرا جب آپ نے کہا نا کہ یہ جو کیسے ہوتا ہے, وہ ایک ایک لائن کو ہم اسٹڈی کرتے تھے, پورے ایک سین کو بنانا, یا کامیڈی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے تھے تو کیسے بولنا ہے, کیسے کیا ڈیلیور کرنا ہے, کیا سٹریسز پازیٹیو, یہ پوری طرح پہلے طے ہوتا تھا. طے ہونے کے بعد پھر ریکارڈ ہوتا ہے, تب جا کے کہیں آپ کو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ جو آپ بولتے ہیں لائیو میں بولتے ہیں, ریکارڈ میں اب چلا جاتا ہے, لیکن وہاں پہ آپ کو بہت فرق ہے. جیسے کوالٹی اور کوانٹٹی میں پہلے ہی میں آپ کو فرق بتا چکا تھا. پہلے کوالٹی تھی, اب کوانٹٹی پہ بڑا کام ہو رہا ہے. یہ بالکل چلتے رہے. جب کامیڈی ہے نا وہ بالکل ہی ڈفرینٹ چیز ہے, بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ چونکہ میں تھیٹر کا ایکٹر بھی تھا, اب بھی ہوں ماشاءاللہ, لیکن اب میں تھیٹر جو ہو رہا ہے اسے میں تھیٹر نہیں کہتا. جو میں کرتا تھا ویسے تھیٹر کہہ سکتے ہیں, تھیٹر لایا ہے. نہیں, ہاں ایک ہی تھیٹر لایا ہے وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ میں تھیٹر کرتا تھا, وہ ہمیں لائیو پرفارم کرنا ہوتا تھا. کامیڈی وہ تھیٹر امان اللہ صاحب کے بعد کامیڈی تھیٹر آ گیا, تو ہمیں موقع ملا نا وہ کامیڈی تھیٹر کا ہی ملا زیادہ. تو اس طرح ٹی وی پہ جو کامیڈی تھی وہ ریٹن کامیڈی ہوتی تھی, تو وہ لکھی ہوئی کامیڈی جو ہے نا وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے, کیونکہ جو فاروق قیصر صاحب ہیں, بہت بڑا نام ہے پاکستان کا, ٹھیک ہے. اب جب فاروق صاحب لکھیں گے جو کامیڈی, وہ اگر ہم اسی طرح سے نہیں بولیں گے جس طرح انہوں نے لکھی ہوئی ہے, تو پھر ہم بھی فارغ ہیں, تو ہم فاروق صاحب کو بھی الزام آ جائے ان پہ بھی. ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہیں. اور جہاں پہ خواتین و حضرات ہمارے ان لیجنڈری اداکاروں نے یہ بات کی کہ 3 کیمرہ شوٹ ہوتی تھی ڈرامے کی, تو آج کل سنگل کیمرہ شوٹ ہوتی ہے یوزلی. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کرو کہ ہم چاروں ایک ڈرامے کے اداکار ہیں, تو ہم سب اپنی اپنی لائنیں اپنے اپنے طریقے سے بول سکتے ہیں, اور پھر ریاکشن ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں. لیکن سب کا اکٹھے ریکارڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سعید انور صاحب نے, رحیل مصطفیٰ صاحب نے اور شزا نے اپنی لائن ٹھیک بول دی ہے اور میں غلطی کر گیا ہوں, تو ان تینوں کو بھی دوبارہ بولنی پڑے گی. آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ہم لائیو جا رہے ہیں نا, آپ پہ کٹ ہو رہا ہے تو آپ بات کر رہے ہیں, میں بول رہا تو میرے پہ کٹ ہو رہا ہے. اگر یہ سنگل ورک کیمرہ تو پھر تو آپ لائیو کیسے جا سکتے ہیں؟ جسے کہتے ہیں نا کسی دی کیتیاں اپنے گیا جانی, یعنی کہ آپ ہی غلطیاں میرے کسی دی کیتیاں. بٹ اچھا, سو بیسکلی مجھے ایک بہت ضروری سوال پوچھنا ہے, اور اس کے انٹرسٹنگ آنسرز ہونے چاہیے. جس طرح شہزاد ابھی کہہ رہا تھا کہ کچھ فینز ہوتے ہیں جو خون سے آپ کو خط لکھتے ہیں, فینز بہت عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے ایک کوئی ایسا انسیڈنٹ سننا چاہتی ہوں جو آپ فین کا کوئی ریکویسٹ ہو یا فین نے مل کے کچھ کیا ہو. آپ لوگ سوچیں, اس سے پہلے we have someone else actually to join us. Exactly, ladies and gentlemen, so what we are actually going to do is that I'm not going to give away the name. We're actually going to share a song with you guys from a legendary singer, and once you guys are going to hear it, afterwards we will be in conversation with that legendary performer and singer as well. Ladies and gentlemen, perfect. Let's go, let's take a listen. Happy Hatch Day, Pakistan Television Corporation. ہے بڑی سہانی دل نے تجھے پکارا, رت ہے بڑی سہانی دل نے تجھے پکارا,
दिलदारा सजने लगे हैं फूलों के गहने शाहों ने पहने सजने लगे हैं फूलों के गहने. All right, ladies and gentlemen, so this was the clip we've actually taken out from Tariq Aziz Saab's show as well. And, I think it's about time that we actually should get into conversation with this legendary singer produced by Pakistan Television as well. He is the one and only, the very legendary Mr. Suhail Akhlaq Saab as well. So, ladies and gentlemen, shortly he will be joining us on Skype as well. But taking you back in time, I think Tariq Aziz Saab's show was one of the best shows as well. Can I recall one thing from his show? Yeah, go ahead. So there was later on he had a show where it was sort of a game show where he would, give away prizes and whatnot. So this one day he announces that I have a huge, it was like a big refrigerator, right? And it was so expensive back then. So he goes like, this is the jackpot for today. It's a huge refrigerator, but I'm going to give it to a person who has special needs, like probably, anything with different needs. Okay. So a person comes up and he cannot walk properly, something is wrong with the leg, and he takes the fridge away. And on his way back, he's laughing, and Tariq Aziz Saab stops him. He goes like, do you really have a problem with your leg? He goes like, sorry, I just wanted the fridge. I think it's been going on for a longer period of time as well. And Tariq Aziz Saab's one of the most famous lines, because I always wanted to be an anchor person and a host as well, was دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا السلام علیکم پاکستان زندہ باد. So I think remembering all of that, ladies and gentlemen, today I think it has given me an immense pleasure for celebrating 56th birthday of Pakistan Television Corporation as well. But ladies and gentlemen, today we have with us the legendary singer and performer Mr. Suhail Akhlaq Saab with us as well. Hello sir, assalamu alaikum, سالگرہ مبارک. السلام علیکم جناب, سب کو پی ٹی وی کی سالگرہ مبارک ہو. And we're very happy, everybody is happy. اور ہمارے لیے تو یہ ایک ادارہ ہے اور ہماری ماں ہے, اور پی ٹی وی پہ جہاں پہ ہم نے کام کیا ہے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے یہاں سے. we have learned a lot. اور میرا خیال میں ہمارے لیے اس سے بڑی اور خوشی کا موقع کوئی نہیں ہو سکتا. کی بات بالکل درست ہے اور میں آپ کی بات کے ساتھ اگری کرنا چاہتا ہوں 100%. لیکن جو ہم نے آپ کا کلپ دکھایا ہے سر ابھی گانے کا, اور جو ابھی ہم آپ کی تصویر دکھا رہے ہیں, اس میں بڑا تضاد ہے سر. کھلا اصل میں جس دور میں ہم نے پی ٹی وی پہ آنا شروع کیا, مجھ سے پہلے بہت بڑے فنکار تھے, بہت بڑے بڑے نام تھے. غلام علی صاحب, پرویز مہندی صاحب, اسد امانت علی, حامد علی خان, اور اس طرح سے بے شمار بہت ہی بڑے بڑے فنکار تھے. تو میرے لیے بیسیکلی آئی کم فرام بزنس ٹرینڈڈ فیملی, سو اٹ واز ویری ہارڈ فار می کہ میں آ کے پی ٹی وی پہ یا گانے میں اس طرح سے آؤں. سو دیر از اے لانگ اسٹرگل بیہائنڈ دس آل. لیکن یہ ہے کہ فائنلی مجھے وہاں پہ ایسا ہوا کہ میرا یہ جی چاہتا تھا کہ میں خواب سوچتا تھا کہ میں کبھی پی ٹی وی پہ گاؤں گا اور اس طرح سے میں گاؤں گا, لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہو. پھر میں نے سوچا کہ میں نے یہ ایسا کرنا ہے, تو ایسا ہوا. اور پھر میں نے پی ٹی وی پہ پہلا گانا گایا, پھر دوسرا, پھر تیسرا. اس زمانے میں ہمارے بہت سارے بہت خوبصورت گانے بنتے تھے, ریہرسل بہت زیادہ اچھی ہوتی تھی, 3 دن ہماری ریہرسل ہوتی تھی, اور ایک گانے پہ اتنی کنسنٹریشن ہوتی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا تھا. ہمیں 3-4 دن جانا پڑتا تھا ریہرسل کے لیے, ایک گانے کے لیے. پھر اس کے بعد آڈیو ریکارڈنگ ہوتی تھی, پھر اس کے بعد جناب ہمیں بلایا جاتا تھا وی ٹی آر کے لیے. پھر ہم وی ٹی آر جب کرتے تھے تو ایک پیشن ہوتا تھا. سو بیسیکلی آئی بلیو ان that it is my passion first, then it became my profession. Exactly, sir. Which is why I have one small question for you, and that is that when I joined television, so there was a lot of I don't know how to explain it, but my family wasn't allowing me to work for television. So back in the day when you wanted to be a singer, I actually wanted to be a host or an anchor person. I wasn't even singing songs. Was it difficult for your people around you to actually absorb
that you wanted to pick up on something, being from a business family, and that you want to sing songs in television. How was it? देखिए हमारे यहाँ यही एक मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक जो है अलमिया है कि हम हर चीज, देखिए म्यूजिक से कुछ भी चीज आज बची हुई नहीं है. आप कोई भी कुछ भी सुनिए उसमें म्यूजिक का अंसर मौजूद है. तो लेकिन उसके बावजूद इर्द गिर्द म्यूजिक चलता था, रेडियो चलता था, रेडियो पे म्यूजिक बजता था. तो उसके बावजूद भी इतनी कंजर्वेटिव सोसाइटी थी कि म्यूजिक का नाम लेते ही घरों में ऐसे होता था कि ये फलां का बेटा, फलां का बच्चा इज गोना बी अ प्रोफेशनल सिंगर, और मतलब वाई हाउ कम. तो मेरी फैमिली में मेरे पापा हाई कोर्ट के जज थे, इस तरह से फैमिली में चचा पायलट थे. तो वो माय फादर वांटेड मी टू बी अ फ्लायर, बट अनफॉर्चुनेटली आई मीन आई एम वेरी लकी. अब मैं बहुत सारे ऐसे फ्लायर्स के साथ जो जहाज उड़ाते हैं उनके साथ मेरे दोस्त हैं, एयर मार्शल हैं, वो सब मैं कभी कभी उनके साथ बैठकर कहते हैं यार जिस तरह से तुम उड़ान भरते हो ना अब भी इस उम्र में भी वो हमारे गानों पे लोगों को उड़ाया सर. वो कहते हैं यार तुम सुरों के साथ हमें उस वहां ले जाते हो, पता नहीं. सो आई बिलीव इन के म्यूजिक भी जब तक उसमें पैशन शामिल नहीं है, ये आप सीख के उतना कामयाब नहीं होते जब तक कि आपकी उसमें रूह शामिल ना हो. और इस इदारे में पीटीवी में मैं समझता हूँ कि उस दौर में जो अच्छा थोड़े से प्रोड्यूसर्स में थोड़ी सी उनके मिजाज में सख्ती थी, हुआ करती थी उस दौर में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पीटीवी था. तो अंदर इस गेट के अंदर आना ही बहुत बड़ा एक करिश्मा गिना जाता था कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट. आई मीन पीटीवी के अंदर आना और फिर आके ऑडिशन और फिर उसके बाद आपको गाने मिल जाना, काम मिल जाना, और फिर उसमें भी कंपटीशन भी था. ऑलरेडी बहुत बड़े लोग थे, लेकिन मुझे ये है कि मेरी खुशकिस्मती कही है कि मुझे मियां शहरयार साहब, बड़े बड़े मौसीकार, तमाम मौसीकारों के साथ काम करने का मौका मिला. और मैं उनको गौर से देखता था जैसे वो रिहर्सल करवाते थे. मैं पूरी दिलचस्पी के साथ और पूरे टाइम के साथ उनके साथ में बैठता था और उनसे उस वक्त भी सीखता था कि ये किस तरह तर्ज बनाते हैं. हालांकि मैं खुद भी आज मौसीकार हूँ, खुद भी कंपोजर हूँ, लेकिन ये है कि वो सारा कुछ सबसे सीखा हुआ मुझे बहुत फायदा दे गया. सो खाली सीखा हुआ काम नहीं, इसमें जब तक आपकी रूह शामिल ना हो, आपका पैशन ना दिखे, आपकी रूह ना बोले, तब तक आप एक अच्छे फनकार नहीं साबित होते. और ये सिर्फ मुमकिन हुआ कि पीटीवी की जो ट्रेनिंग थी, पीटीवी में उस वक्त जो एक ठहराव था, आज जो डिजिटल दौर है, आज के दौर में आप गाना गा के आइए, 10 मिनट का गा के आइए, म्यूजिक उसमें बाद में डाल लेते हैं, आवाज बाद में डाल लेते हैं, पंच करके, फिर यूं करके. सो सब कुछ जो है वो डिजिटल उसमें चला गया, जिसमें उसका असल हुस्न जो है मौसीकी का. लेकिन सर मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी के ऊपर भी नई तहकीकात हो रही हैं, तो उसको अडॉप्ट भी करना चाहिए. लेकिन बहुत अच्छा लगा सर आपसे गुफ्तगू करके, आपने वक्त निकाला, आपने हमारे साथ शेयर किया कि आपके ज़माने में क्या क्या चीज़ें थी. हमें बहुत खुशी हुई सर. एक दफ़ा फिर से सालगिरह मुबारक और बहुत शुक्रिया अपने गानों पे लोगों के लिए उड़ान भरने के लिए सर. बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. आगे भी बहुत कुछ होगा सर, इंशाल्लाह. Inshallah, sir. Thank you very much, sir, for being with us. We're really so proud to actually have people like that under the name of PTV as well. Very quickly, we're going out to a short break, Yes. are we? Yes, and when we come back, we will definitely ask the guest in the studio what crazy or weird thing their fans did to them. Stay tuned to find out. Good morning. Good morning.
Welcome back to World This Morning, ladies and gentlemen. A very, very happy 56th birthday to the Pakistan Television Corporation as well. All the channels are together celebrating the 56th birthday today. And since we're left very short on time as well, so I think without further ado, we are going to be joined by one legendary producer, writer, and the back then director of photography as well. Mr. Shakeel Adnan Hashmi is online with us. Hello, assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम सीधा कैसी हैं आप ठीक You're हैं 5 खैरियत times हैं national award winner. I think it's a very different day for me that I actually get to be in conversation with so many legendary people as well. So what do you have to say? Please share your thoughts about Pakistan Television celebrating its 56th birthday. And coming so far. Okay, I'm feeling very glad today. Congratulations to you and Shiza also. Thank you, sir. So बहुत खुशी की बात है कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन को और इट्स अ फैमिली चैनल आई थिंक एंड वी ऑल आर फैमिली सो स्टिल वी आर वर्किंग फॉर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से हम अपने रिवाइव कर सकें अपने तमाम जो हमारा क्लासिकल एरा था उससे लेके आज सो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया स्ट्रीम जो मेन स्ट्रीम है उसकी वजह से सो हमें शायद मेरा ख्याल सोशल मीडिया के ऊपर भी और बड़ी अच्छी बात यह है कि वी आर ऑन सोशल मीडिया नाउ और हमारी प्रोडक्शंस जो हैं वो अब सोशल मीडिया पर भी उस मेन स्ट्रीम पे आ रही हैं और दिस वेरी वेरी गुड और जो नई रजीम है इस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन में अब जो तब्दीली आ रही है थैंक्स टू गॉड अब लग रहा है कि चीज़ें तब्दील होंगी इंशाल्लाह. But sir, you know, like Shahzad mentioned, माशाल्लाह से आप 5 times national award winner भी हैं और आपके कुछ plays, dramas, short films वगैरह बहुत ज़्यादा चाकरे आज़म, धुआं. Yes, और you know, शीला बाग for that matter. लेकिन आपका personal favorite कौन सा है और क्यों? फेवरेट से मुराद आप क्या मतलब कि कोई एक होता है प्रोजेक्ट जो इंसान के दिल के बहुत करीब होता है, कोई रीजंस होते हैं उसके पीछे. हमें आपके सारे काम बहुत पसंद है, लेकिन आपका कोई एक है जो आपको बाकियों से ज़्यादा पसंद है? एक्चुअली ज़्यादातर काम तो मेरा कोयटा टेलीविज़न से मैंने किया और कोयटा टेलीविज़न से जितनी प्रोडक्शंस हुई आपने देखा होगा कि उनमें हमारा जो एक कल्चरल हेरिटेज जो है उसको हमने पोर्ट्रे किया. सो मेरे ख्याल में कोयटा से होने वाले जितने ड्रामे हैं हमने धुआं से पहले धुआं एक लैंडमार्क है. अब आप कुबरिक को अगर देखें तो कुबरिक के स्टाइल को हमने 96 में 94-95 में हमने जो एक टेक्निक होती है जिसको लॉन्ग टेक कहते हैं हमने लॉन्ग टेक के ऊपर जबकि हमारे पास कोई भी स्टडी कैम या इस तरह के जो गैजेट्स थे वो हमारे पास उस दौर में नहीं थे. उसके बावजूद हमने एक लैंडमार्क दिया सिनेमाटोग्राफी में एक्चुअली. और जो फील्ड प्रोडक्शन में जो आप सिंगल कैमरा प्रोडक्शन करते हैं तो आपको बड़ा कंटिन्यूटीज का ख्याल रखना और बाकी तमाम चीज़ों का ख्याल रखना. सो मेरे ख्याल में हम बहुत अच्छा काम करके आए हैं और वी शुड रिवाइव करने के लिए किसी तौर पे हमको जो टेक्निकल साइड है हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी आज के दौर में. मेरे ख्याल में अगर आप देखा जाए तो चाकरे आज़म एपिक आई थिंक एंड लाइक तगरल जो है जिस तरह से ये टर्किश प्ले चल रहा है अगर आप देखें तो हमने बैक तकरीबन 92 में गालिबन हमने ये किया था चाकरे आज़म और इट वाज अ ह्यूज प्रोडक्शन और उसको हमने जिस तरह से सिंगल कैमरे से हमने उसको हैंडल किया था सारी प्रोडक्शन को. बिल्कुल सर. और शकील साहब सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम जब ये 56 बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये सब आप लोगों के काम की वजह से ही सर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम यहाँ पर पहुँचे हैं. बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, बहुत अच्छा लगा. Thank you very much for being with us and stay happy and stay safe, sir. Thank you very much for being with us. Same to you. Thank you very much, sir. Jazakallah. So, ladies and gentlemen, we were in conversation with Shakeel Adnan Hashmi Saab, one of the legendary producers and directors as well. But I think it's about time that we go back to Raheel bhai and Saeed bhai as well. एक सवाल जो है वो शिजा हाशमी ने आपसे पूछा था. जी प्लीज. और वो सवाल ये था कि जब एक ही शक्ल नजर आए और एक ही टेलीविजन चैनल हो तो उसके बहुत सारे चाहने वाले परस्तार होते हैं उस सितारे के.
لیکن کبھی کبھی چاہت میں لوگ بہت آگے نکل جاتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوا کہ کوئی آپ تک پہنچ گیا ہو, کوئی مسئلہ بن گیا ہو, پریشانی بن اس گئی طرح کا تو کوئی سین نہیں ہوا, پر گھر سے ڈانٹ بہت پڑتی تھی اس زمانے میں. جو رابطے کا جو سین تھا وہ ایک جو لینڈ لائن فون ہے وہ کبھی کبھی کہیں کہیں گھروں میں ہوتا تھا. اس زمانے میں ایک گھر یہ بھی لگ گیا نیا جب یہ ہم نے گھر میں فون لگوایا تو اوپر نیچے کالز آتی تھی, تو نمبر بھی لوگوں کو مل جاتے تھے, تو کالز بہت آتی تھی. آپ ان سے بات, راہیل سے بات کروائیں, ان سے بات تو اس کی وجہ سے یہ بڑا پرابلم ہوتا تھا کہ کالز میں آنا, گھر سے نکلنا, لوگوں نے پکڑ لینا, آئیں جی ہمارے ساتھ آئیں, ادھر کریں, یہ کریں. یہ ڈیفینیٹلی. اور وہ زمانہ بھی آٹوگراف کا ہوتا, آٹوگراف, سیلفی تو تھی نہیں, بہت بہت فوٹوگراف کا بھی تھا, فوٹوگراف کا بھی تھا, فلیش کیمرہ جیب میں لے کے. سر بتائیں آپ. سر وہ فین کی آپ نے پوچھا نا, تو میرا ایک چھپر ہوٹل ڈرامہ تھا, اس میں میری جو اپنا وہ وجہ شہرت تھی وہ تھی گونگلو, چھیڑ تھی میری. تو میں فیصل آباد میں تھا, تو نا ایک موٹی سی خاتون میرے پاس سے گزری, کسی بچے نے آواز دی گونگلو, تو وہ خاتون نے اس بچے کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا. تو وہ میں نے کہا آنٹی کیوں مار رہی ہیں, اس نے مجھے گونگلو کہا ہے. میں نے کہا آپ کو نہیں, مجھے کہا. میں اس وقت سلیم تھا, کہتے تم گونگلو لگتے ہی نہیں ہو. میں کہا میں ٹی وی پہ آتا ہوں, میرا نام گونگلو ہے. کیا بات ہے سر, ہمیں ہمارے پاس وقت کی سر کمی ہے, ورنہ ابھی ہم نے کچھ اور بھی چیزیں آپ کے ساتھ پلان کی تھی جو ہم شاید آج نہ کر سکیں, لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ صرف سالگرہ پہ نہیں, ہم اپنی زندگیوں میں بھی آپ کو اسی طرح شامل رکھیں جیسے آپ نے اپنی زندگیوں میں ہمیں شامل کیا اس وقت پہ, جس وقت صرف ایک ہی ٹیلی ویژن چینل تھا جس کی آپ لوگ پیداوار ہیں. اور پی ٹی وی کے لیے سر آپ لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اسی کی وجہ سے, جو میں نے بھی پہلے بھی کہا, ہم آج سالگرہ کی وجہ سے ہے. سر پی ٹی وی نے ہمارے لیے جو کیا نا ہے کہ ہمارے جو فیس ہمیں جو پہچانتے ہیں, آج آپ نے بلایا ہے, آج پی ٹی وی نے بلایا, تو پی ٹی وی کی وجہ سے ہی ہم پی ٹی وی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ سر, ہم پی ٹی وی سے پی ٹی وی ورلڈ تک پہنچ گئے. تو ہمارے لیے اس سے زیادہ کوئی اور بات خوشائی نہیں ہے کہ آپ لوگ آئے, آپ لوگوں نے وقت نکالا, ہمارے ساتھ شیئر کی اسٹوری. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, جمشید صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں یاد رکھا. جزاک اللہ سر, تھینک یو ویری مچ سر, آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. But thank you so much for being here, ladies and gentlemen. A small surprise is actually that Raheel Sabover happens to be a secret singer as well. Well, not a secret anymore, but he sings amazingly. So towards the end of the show, right after this very minute, he is going to wrap up the show with his song. So if you have any queries or rather feedback, if you want to wish us a happy birthday as well, write us on our social media pages on Facebook, Twitter and YouTube with the name of World This Morning. Absolutely. And the repeat of this show you can catch at 5 past midnight, ladies and gentlemen. Till the next time, look after yourselves. PTV, Pakistan, Zindabad. سر گانا سنا دیے. جب کوئی پیار سے بلائے گا, جب کوئی پیار سے بلائے گا, تم کو ایک شخص یاد آئے گا, تم کو ایک شخص یاد آئے گا, جب کوئی پیار سے بلائے گا. زندگی کے درد کو سہو گے تم, دل کا چین ڈھونڈتے رہو گے تم, زندگی کے درد کو سہو گے تم, دل کا چین ڈھونڈتے رہو گے تم, زخم دل جب تمہیں ستائے گا, زخم دل جب تمہیں ستائے گا, تم کو ایک شخص یاد آئے گا, جب کوئی پیار سے بلائے گا.